time for the meet and greet. Meet and greet. It's time for the meet and greet. Hello everyone, this is Asavari's meeting show 31 with Mr. Vakil Ansari. Vakil ji, you are very much welcome to Asavari's meeting show. And let me tell you, Nazreen, वकील जी हमारे कम्युनिटी के एक बहुत ही जाने माने शख्सियत है और हम सब लोग उनको बहुत मानते हैं और मैं गुजारिश करूंगी कि वकील जी आप प्लीज अपने आप को हमारे नाजरीनों के सामने थोड़ा बताइए अपने बारे में. थैंक यू सो मच. Thank you, Gargi ji. It's an honor and pleasure to be in your show. Well, we know each other. I have been in community in around last 40 years in New York. And what do I do? Well, professionally, I'm an architectural engineer and work in administration for almost 40 years. But on the community, I have been working as an anchor person, have been writing columns in the community newspapers, have been interviewing people, dignitaries, and this way, and of course, I do write poetry and all those things. So I have been around, love local politics. I have been involved in politics, which is I'm called the mainstream America. So I have been around. So I have 3 kids, 2 sons, 1 daughter, and very proud father. And grandfather. And grandfather, of course. आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पोता हुआ है आपका. Yes, yes, तो yes. बहुत ही बड़ा खुशखबरी है हमारे लिए, हम सभी के लिए. और आपका पोता का नाम क्या है बताइए. उसका नाम हमने लिखा है सिद्दीक. सिद्दीक means a person who speak the truth. Such. सच. Such. I know. आजकल के जमाने में सच्चाई बोलने वालों का बहुत कमी है. आजकल के जमाने में सच की बहुत कमी है, तो उसका नाम है सच. बहुत अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है, I would say, and I wish him all the very best of luck. तो अभी हम सीधा मुद्दे पे बात करते हैं. तो हमारी जो पहला मुद्दा है वो है Women History Month. So Women's History Month is an annual declared month that highlights the contributions of women to events in history and contemporary society. It is celebrated during March in the United States, the United Kingdom, and Australia, corresponding with International Women's Day on March 8th. Women presidents and prime ministers of the world with remarkable names are Benazir Bhutto of Pakistan, Indira Gandhi of India, Angela Merkel of Germany, Shri Mabho of Sri Lanka, Jacinda Ardern of New Zealand, Margaret Thatcher of United Kingdom, Sheikh Hasina of Bangladesh, Yaxomara Castro of Honduras, and many others. So my question to you is, what is your opinion about a woman leader? Can a woman achieve more than a man? Well, of course, history tells us, let's not go too far. I will just give you a name and you will see. The name is Rosa Parks. Like lots of people doesn't know who Rosa Parks is, but lots of people know who Martin Luther King is. Well, Rosa Parks was the girl who was sitting on the bus on the seat which was for the white people, assigned for the white people. And somebody asked him to move from here. And she said, no, I'm not going to move. And at that time, police arrested her and she went to the jail. And from there, I think Martin Luther King started doing the, protest and all those things. So the spark was Rosa Parks, where the Martin Luther King came and the whole Black freedom comes in. So in history, you can repeat it. Jhansi Ki Rani. Wow, you go to subcontinent. And definitely you name lots of people, but surprisingly, when you go to subcontinent, which is India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, all women have been prime minister over there. Though we call them third world countries, but take a look,
The women have been so bright. Now, so if I say that there is nothing have been successful in the world or any movement once the women are not there. So without women, you cannot do it. Let's have a respect. Let's have them, because women are more observer. Their brain, and which is also scientific fact, कि एक वक्त में एक woman can do three things. She can do the cooking, on the telephone, and take care of the kid. A man can do only one thing at a time. So let's put it this way. I mean, this is research I'm telling you. So let's not underestimate a woman. But yes, we need a good partnership, and that partnership, I mean, take a look, Nehru ji. Nehru was a great person, and her sister, Vijay Pandit, and she was the first UN ambassador in United Nations. That was her sister. Qaid-e-Azam, which is Muhammad Ali Jinnah. Her sister, Fatima Jinnah, was the right-hand person. So women have been very good partners. And once if you have a good partner, you will be a successful man. Like, in every man's success, there's a woman behind it. I know. और देखिए, जनाब, that woman जो loves है उसमें, wow, man, man तो आता ही है. मैं आज एक्चुअली मैं अपने नाजरीनों को दिखाना चाहती हूँ. मैं एक्चुअली वुमेन्स हिस्ट्री मंथ के लिए जो टी शर्ट पहनी हुई हूँ, ये एक्चुअली जनाब, आई डोंट नो इफ यू कैन सी और इफ माय नाजरीन कैन आल्सो सी, देयर इज अ लोगो हियर यूनाइटेड नेशंस का. तो ये ना यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स गिल्ड का है एक्चुअली, Yes. So if you can see, take a look. Yeah, तो खासकर it is there. It's beautiful. मकसद के लिए मैंने पहनी हूँ, क्योंकि टी शर्ट एक ऐसी चीज होता है दैट इट मेक्स somebody फील प्राउड, तो इसीलिए मुझे लगा ये बहुत ही नाज और फकर की बात है दैट वुमेन हिस्ट्री मंथ, आई मीन लाइक पूरे दुनिया में ख्वातीनों का जो कंट्रीब्यूशन जो रह चुकी हैं, तो उसका कदर पूरी दुनिया आज करने लगे हैं. और देखिए रहे सवाल हमारे अमेरिका का, तो इतने सालों बाद अमेरिका को एक खातून मिली है, कमला हैरिस, जो कि हमारी वाइस प्रेसिडेंट है. तो शी इज द फर्स्ट वुमन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और देखिए अगर अल्लाह मेहरबान हो तो आपको इन द नियर फ्यूचर the first woman president of the United States of America भी मिल सकती हैं. Yeah, we were very close, as you remember, just 3 years back, 5 years back, we were very close, because there was an election in 2016 where Donald Trump and Hillary Clinton were very close. She got more vote than Mr. Donald Trump, but somehow she lost it. So I think women are knocking the door to be the president of the United States. That's not too far. Inshallah. Inshallah. और हिलरी क्लिंटन साहिबा, actually, if you recall, she got the most popular vote, Exactly. उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर वोट्स जीत चुकी थी. सो उम्मीद रखती हूँ दैट जैसे कि कमला हैरिस साहिबा हमारे पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है, सो लाइक हर पहली कोई खातून हो सकती है कि इस वतन का वजीर आजम भी बने. President, yeah, why not? I mean, take a look. Right now we are having a black woman in the Supreme Court. Right, exactly. This is one thing. So I think this is a very old fashion that women can't do what men can do. No, I think everybody can do it. It has nothing to do with men or women. Like Kamala Harris, she was very educated lady. She has done so much in her life, and because of that, she is the vice president of the United States of America. So let's put this way. Like I said, Hillary Clinton could have been the president, and there are so many women coming. And let's put this way. Girls from subcontinent, from India and Pakistan or Bangladesh, now in United States, they are going for Congress. They are going for local politics. They have been in the big corporations. So this country, particularly in Western world,
If you are educated, you are level-head, and you work hard, I think it pays off, and women are getting benefit of it. तो ये हम सबके लिए honor है. Exactly, और देखिए, ख्वातीन कहाँ नहीं जा रही हैं, starting from space, I would say, Yeah. then, army, military, navy, and then कितने सारे ख्वातीन पूरी दुनिया में CEO रह चुकी हैं, बन रही हैं. So it is amazing, that कैसे, I mean, now we are getting some kind of importance to the world. तो हम कोशिश करते हैं, जो हम सब लोग जो ख्वातीन जो होती हैं, जैसे कि आपने अभी कहा, that we try to be multitasking, हम अपने खानदान को भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, और ऑफिस दफ्तर को भी संभालते हैं, दोस्तों को भी संभालते हैं, और जो बड़ा बच्चा होता है हस्बैंड, उसको भी संभालते हैं. उसको भी No doubt Exactly. about it. बहुत सही कहा. तो हमारे जो दूसरा मुद्दा है, इट इज अ लिटिल सीरियस इशू एक्चुअली. तो इट इज अबाउट द सऊदी एग्जीक्यूशन एंड द वहाबी कल्चर. तो जनाब, आपने एक्चुअली पूरी दुनिया ट्रैवल कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ जो रिसेंटली सऊदी अराबिया में हुई हैं, और फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ. Sure. Saudi execution is usually carried out by beheading with a sword, but may occasionally be performed by hanging or shooting. The Ministry of Interior on Saturday announced the execution of 81 people, including 7 Yemenis and 1 Syrian, all of whom had been convicted of a wide range of offenses, including terrorism, such as ISIS, Islamic State, Al-Qaeda, and the Houthis, also for murder, armed robbery, and arms smuggling. A number of those executed were also convicted of charges such as disrupting the social fabric and national cohesion and participating in and inciting sit-in protests, which describe acts that are protected by the rights of freedom of expression, peaceful assembly, and association. The death penalty is the ultimate, cruel, inhuman, and degrading punishment and a violation of the right to life. So, sir, what is your opinion about it? देखिए, आप दो चीजें सोचें. Every country have their own culture and their own constitution. Saudi Arab have been a very rigid kingdom. It has been there. And killing, or let's say those 80 people, they are convicted. And that's the way their constitution is. And you can see, you can go to Saudi Arab. I have been in Saudi Arab. And I have seen in Saudi Arab, because of this hardship, and I don't condone it, I don't like it, but what I have been travel all over Saudi Arab, and there's a time the azan is happening and everybody leave their shop open and nobody touches anything, nobody can steal anything. Unfortunately, Saudi law has been very, very hard, but gradually it is coming better. But all these people who has done certain things, of course they punish it, and punishment is killing and death penalty. This is their law. So really, I'm sitting in the Western society, and where a person go through 6 years, 10 years, and he get the death penalty. Recently, I have searched lots of cases where people have been in the American jails, and after searching their records, I know they were convicted and they were ready to be killed, but find out, no, the jury was mistaken, those people. So this is a very tricky law. Sometimes a person who happened to be black, he doesn't have a good money, he cannot fight his case, and suddenly he is convicted. So I'm not saying that Saudi Arab is doing great. In the meantime, I'm saying we are not doing great either. So there are always loopholes in justice system. So it will get better. I think Saudi have been like that. I am sitting in a New York City, and I can say, well,
That is bad. That's very, very bad. But in the meantime, you can go, a woman can travel alone in Saudi Arabia, and nobody will look at her, and she is not going to be touched. That's Saudi law, and that's Saudi's streets. I have been there, and you can ask anybody. So unfortunately, there's a harsh punishment, but sometimes it comes out better. In New Delhi or Lahore or Karachi, a woman can or girl can walk on the street like that? No. So this is one-sided and second-sided. So I'm not very happy what Saudi does, but sometimes I can see the example, the punishment, people see it and they know it, they won't do it again. So you have it. I know you don't like the answer. I can understand. I don't like it either. ऐसे कोई बात नहीं है जनाब. I don't like it, but I'm not advocating Saudi Arabia, but it says since you have been traveled, I have traveled Saudi Arabia, not one time, two times, three times, and I have seen the street in Jeddah, in Medina and other places. There is almost zero crimes. हाँ वो तो है, लेकिन मेरा एक सवाल जो मेरे दोस्तों का और नाजरीनों का भी सवाल हो सकता है, वो है ऐसे कि देखिए एक चोरी, हाँ, या तो एक डकैती, इसके लिए टू चॉपिंग ऑफ द आर्म्स और लिम्स और एम्प्यूटेशन जिसको कहते हैं, आई मीन बहुत ही दर्दनाक होता है, एंड दे से दैट दे फॉलो द शरिया लॉ. लेकिन जो लोग शरिया फॉलो करते हैं, दे से दैट शरिया लॉ इतना खतरनाक नहीं है. तो आप अगर थोड़ा सा if you can रोशनी डाले that actually. Well, very good question, Sharia law. Let me tell you, there was a conference in Saudi Arabia, and they find out which countries has the most better Sharia law. And you know who's the Sharia law the country has it? That is United States of America. They have Sharia law. It doesn't mean that Islamic law, but like a woman get, a father have died because of age, she get her share of money. That's bad. A person getting old, they get the money from the estate. Her husband died and she get the pension. This is all Sharia law, which is United States have it. And there I can go at least 10 more where the respect of a woman. A woman, if you are divorcing her, well, give her some money. Let her have stay on her, what you call the status. A millionaire, suppose I'm a millionaire, I'm divorcing my wife, and she doesn't have money. No, government said give her 50% of your money. I know child custody और alimony जो है उसमें actually equality ज़्यादा है. Exactly. So this is all Sharia law, but this is American Constitution and American laws, and this is beautiful. And we don't say that in Saudi Arabia, yeah, they follow this thing. If you are divorcing your woman, you have to give her the same status. So that's what I say. That I know it is sometime women are not treated as equal. Right now, they are getting better. They can drive, they can vote, and they can travel alone. So this is getting better. What was 10 years back is better now. So, जनाब हमारे नाज़रीनों को थोड़ा वहाँ भी कल्चर हेरिटेज के बारे में अगर कुछ आप बताएं तो बहुत मेहरबानी होगा. देखिए, I'm not expert on the religion myself either. लेकिन वहाँ भी culture जो है, they want to keep the system which is the Islam came 1500 years back. And they want to keep it as is. They don't want to deviate from the account or from the system. So they want to keep same system as is. The world has been changing. Every religion have changing with the time. Unfortunately, Wahhabis, they think, no, we are going to stay and we will be okay. They have been successful. The chemistry of the government of Saudi Arabia is that Wahhabism, one sector who are very orthodox, they are part of the government and they take the justice system to them. And the other section is the king has it. So this is a complicated system over there.
but Wahhabism is very strong, and there has been a war to slow down, melt down. So I personally tell you that I may not like Wahhabism. Unfortunately, I don't like otherism either. This is a country, religion is your own thing. You live the way you are going to die, and you're going to take your amal with you. So I may not agree, and I'm not advocate of that Wahhabism, but Wahhabism has been there, and they want to stick to that. And that's why those hand and murder and all those things, killings goes on, because that's their religious system. एक और बात, about this 81 killings, मैंने सुना है that फांसी दिया गया था, they were hanged by neck till death. So usually beheading होता है, या तो sometimes shooting, लेकिन ज़्यादा दौर से beheading. तो I mean capital punishment तो capital punishment ही है, इसमें अच्छाई तो होता नहीं है, जिसको नसीब होता है वो बहुत ही बदनसीब होते हैं, और उनके खानदान भी. तो लेकिन एक चीज गॉड से अगर देखा जाए, दैट a difference between beheading and फांसी is that beheading में बहुत खून निकलता है. So फांसी जब होता है तब there is hardly any blood or no blood. So मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ. देखिए, हाँ, मैं तो दोनों के अगेंस्ट मैं भी हूँ. मैं ये कहता हूँ, अगर वाकई जो मेरा ये कहना था दैट क्रुएल्टी का जो लेवल beheading से होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खून निकलता है, एटलीस्ट फांसी में which is equally bad, ऐसे कोई काबिल तारीफ काम तो नहीं किया इन्होंने एक ही रोज में 81 लोगों को फांसी देना. तो लेकिन ये चीज कुछ लोग ने मुझे बोल रहे थे दैट beheading नहीं हुई. See, we are sitting in the Western world. We are growing up over there, and yes, it looks like in America they use the electric chair, and how many times the electric chair. Lethal injection जो है. Exactly, lethal injection is much better. That you inject and you die slowly. This is much better, like electrical chair, and so many times it happens, person did not die. So killing someone is not always the great thing. Unfortunately, in society, people have done so much wrong. You have killed innocent people, you have done so much bad, and I think you have no right to stay in the society. You have to be removed from the society. So one thing is that once you are going to remove that person, how to remove it? Yeah, lethal injection is a good idea. Phansi, hanging, and taking their with sword, these are more worse. But it is not for them to, it is for other people to see it, that this can happen to you. Right. क्योंकि ये execution जो तमाम हुई है, in Saudi Arabia, it is mostly done in front of the public, and then stoning also, that is crucifixion, oh my God, just unbelievable. If you remember that Saddam Hussein, when they find it, he was in the control of the of course American administration, and then I think they gave it to the opposition of Saddam Hussein, and usko bhi phansi di gayi. Could have been lethal injection, but why it was phansi di gayi? Because they wanted to show that, okay, you have done so bad to this country, and here you are. So देखिए, ये discuss करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन don't forget the culture of the country. Saudi Arab, the Arab countries, they have this culture. Even sometime you can go to certain countries, it has been more worse. So जो 80 people को जिस तरह मारा गया Saudi Arab में, it sounds good, sounds very bad, but अगर आप कुछ कर रहे हैं उस country को, नुकसान पहुंचा रहे हैं, and they get you like the Yemenis
and Syrian and this and that. I think the punishment is removed from the society. Very simple. एक्चुअली मैंने ये भी सुनी थी कि कार्रवाई ठीक से नहीं हुई, सो लॉयर्स को आने नहीं दिया गया, एंड देन किलिंग, आई मीन लाइक कैपिटल पनिशमेंट के पहले लाइक बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। तो देखिए, मैंने इस केस को ज्यादा फॉलो नहीं किया। अगर ऐसा किया गया है तो दैट इज इलीगल, बट अगेन आई विल से देयर इज अ सिस्टम इन सऊदी अरब. Yes, you can say what you did. It is not like a 3 years or 5 years, 6 years you will be stay in jail and case chalega. Usme ye hota hai ki okay, tell me what happened, and they said, well, that's what you have done it, yes or no. And there is a judge who say, well, what we see jo bhi hai, I think you have done wrong and you are killed by hanging or by killing or whatever it is. So this is not great. We are talking a society which has been a very, very orthodox and very, what I will say, the old system, but that's the way Saudi Arabia is. हमारा एलाई भी तो है, I'm representing United States of America, so हमारा एलाई है. Our biggest ally, though I don't want to go deep into politics. I mean, don't forget, Khushki, the person they killed it in Turkey, one of the American soldiers who was criticizing Saudi Arab, they killed him in Turkey. It's a very big case. And this guy was in United. So unfortunately, world is very different than us. I know. Anyway, last but not the least मुद्दा, ये actually Pakistan के बारे में है, about the current situation of Pakistan. So let me read and then I'm going to ask you a question. Pakistan's parliament took up a no confidence motion moved by opposition lawmakers on Monday in a bid to remove Prime Minister Imran Khan, pushing the South Asian nation closer to political turmoil. The bid for a vote of no confidence has raised the risk of constitutional, administrative, and economic crisis amid a pending International Monetary Fund review on the next tranche of a 6 billion rescue package. Pakistan's parliament will convene and is still doing the proceedings into a no confidence motion. It could take 7 days before an actual vote to decide if Khan will be removed. So my question to you is, what is the current count as per the 172 votes concerned? And what is the army saying, by the way? Well, there's two questions. You see, Pakistan politics or Indian politics is more complicated than any other politics. I'm not, let's say, educated enough to discuss those things, or I'm not that smart to understand those things, constitution. But what I see is all constitution system which is going on. Vote of non-confidence in the parliamentary system, where the prime minister can be removed. Let's not forget, just last year, Israeli Wazir-e-Azam Benjamin Netanyahu, who has been a prime minister of that country for a decade or more than a decade, he lost because of one vote of no confidence. So this has happened in the parliamentary system. Now, he has done a great job, but there were liberals and there are conservatives. And I think there was a vote of confidence against him. And he thought he will win it like last 3-4 times. No, he did not. He lost it, parliament. And now he's sitting in the opposition because he lost from one vote. So with Khan, I mean, sure, in Pakistan, there is a war of corruption. He has been against of those groups who has governed Pakistan for the last 40 years. And there has been corruption in Pakistani politics, use and misuse of money. And I think they got together and they decided, okay, the only one way we will have a no confidence. So at least, we will be okay. So this is going on. Right now, what I was watching,
that opposition got the more vote to remove him as a prime minister. But still he has some choices. Either he can declare a new election within 90 days and he can save himself, but election should be there. In the meantime, if they remove him by vote of non-confidence, that's okay. He should be in opposition. His party should be better controlled in opposition, and he can do as good as in the government. So really, it's a democratic process. It should go on. Now, the question you said, what army does, what army say? Well, what I heard and what my people know, and I have been in Pakistan just 2 weeks back, I was in Pakistan. After all, army decided to be neutral. Army decided, okay, play your games. Let it be okay. Which way we gonna go? But there are lots of people, millions of people who love Imran Khan. They want him to be continued. He is a capable person. I personally know him because I worked with him in United States in fundraising for Shaukat Khan Memorial. But don't forget, he's Khan. Sometimes he's not easy to handle. In politics, you have to be hard. You have to be very soft. You have to go with the flow. Khan is not like that. He could have won this thing, but I personally think he's going to stick to his idea. And let's hope his party stick together. So we are thinking in Sunday, opposition have a majority, and Khan will be sitting in the opposition unless otherwise something work out or somebody move back to him. I understand that, I mean, एक सवाल एक्चुअली मेरे दिल में आया, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ. देखिए, मेरा अगर रोल मॉडल कोई मुझे पूछे दैट गार्गी, which president or prime minister is your role model? So मैं एक्चुअली देखिए, जस्टिन ट्रूडो ऑफ कनाडा, उनको मैं बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि he has a sugar coated mouth. तो इसीलिए जस्टिन ट्रूडो इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड पोजीशन, क्योंकि उनका जो कंजर्वेटिव पार्टी जो है ऑपोजिशन, आई मीन ट्रूडो के अगेंस्ट इतना कुछ बोल ही नहीं पाते बिकॉज ही डजंट गिव देम अ मौका, एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अगेंस्ट हिम. और इसीलिए लिबरल पार्टी इतना बेहतरीन जीत हासिल करता आया है. तो खान साहब जो है, इमरान खान साहब, देखिए मैं उनके कदर करती हूँ, इज्जत करती हूँ. ही इज़ अ वेरी वेल रेड, वेल एजुकेटेड. लंदन से उन्होंने पढ़ाई किया और पाकिस्तान को उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के ला के दिए हैं. लेकिन कभी कभी उनका जलसे में उन्होंने एक्चुअली ऑपोजिशन के खिलाफ बोलते रहते हैं. देन रिसेंटली ये जो बिलावल भुट्टो ने कुछ स्लिप ऑफ टंग हुआ, उसको मजाक में लेना, एंड देन आई थिंक फजलू साहब को डीजल बोलना. तो ये बातें एक्चुअली लोगों को नापसंद आया. और डू यू थिंक दैट दीज काइंड ऑफ रिमार्क्स दैट खान साहब ने अपने जलसे में किए हैं, तो इट वुड बी और मे बी और हैज बीन द वजह ऑफ दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन? No, I don't. No, I don't think so. I think देखिए हमारे वहाँ जो जलसों में ऐसी बात होती, मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो started this thing. He started calling somebody rat and चूहा and ये और वो. But he was a dynamic leader. जुल्फकार अली भुट्टो नो कि पब्लिक क्या चाहती है, तो वो ऐसे ही बोलते थे. वो जमाना और था. Now it's a social media. मैंने नोटिस किया कि थोड़ा सा इमरान खान ने भी वो लैंग्वेज यूज करने की इसकी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी. एंड आई एग्री विद यू, बिल्कुल जरूरत नहीं था बिकॉज़ खान साहब हैज हिज ओन स्टैंडर्ड. अभी आपने शुगर कोटेड कहा जस्टिस ट्रूडो को, तो रिमाइंड करूं कि 1972 से 1970 तक मैं कनाडा में था, पढ़ा. तो इनके फादर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, एंड आई मेट हिम एंड दैट वाज अ लिबरल पार्टी. यस, there should be a good attitude in politics. लेकिन अभी जमाना चेंज हो गया है. अभी आपने देखा कि
आज से 2 साल पहले हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप, उनकी लैंग्वेज क्या थी? Oh my God. ओके, तो बहुत अनफॉर्चुनेटली शर्मिंदा किया पूरे वतन को उन्होंने। बहुत शर्मिंदा किया उन्होंने, गे को या डिसेबल पीपल, मुस्लिम बैंड, ऑल. He said anything, but there were some kind of his voting base, which was we call it the Bible Belt area. People loved it. People loved it when he said, Hillary Clinton, arrest her. Yeah, and then he also called her publicly nasty woman, जो जब Nasty वो woman. presidential debates के time So, पे. so there are certain people who are sub-level in education. They love this kind of language. They love this kind of thing. He's just like us. He's talking like us. Khan tried to do it. I think Zulfikar Ali Bhutto did it. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. I do not know in Khan case it is work or not work. Khan, millions of people love him. I wish him good luck. And I think if his party hold on to it, even in opposition, he will do better. Let's see. क्योंकि खान साहब जब अमेरिका में आए थे तो बहुत बड़ा और बढ़िया उनका जलसा हुआ था, तो उसमें भी मैं जब लाइव देख रही थी तो मुझे लगा दैट पीपल वर एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ अ फ्लोर मैप, रोड मैप, आगे क्या करना है, लेकिन खान साहब ने बारीकी के साथ लगातार ऑपोजिशन के खिलाफ बोलते ही जा रहे थे, बोलते ही जा रहे थे। तो एट सम पॉइंट मुझे लगा दैट खान साहब का एक स्टैंडर्ड है, खान साहब को हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं। ही हैज हिज ओन इमेज, इट्स अ वेरी डिग्निफाइड इमेज, उनका जो पर्सनालिटी है वकील साहब, बहुत ही शानदार एक पर्सनालिटी है। तो जहां जरूरत नहीं है रिडंडेंसी का, इरिलेवेंट बातों का, तो उधर ही कुड हैव been more polished like Justin Trudeau. ये मेरी पर्सनल देखिए, ओपिनियन है। ना बिल्कुल आपका सही है, मेरा भी ये है। लेकिन इसको समझिए कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का कोई स्पीच कहीं भी करें, वो उन लोगों में भी जाती है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, ही वॉज वेरी गुड अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर। ही इज वेरी गुड इन फैक्ट्स एंड फिगर। वो एजुकेटेड के लिए होती है। वो जो किसान है देहात में जो है, वो आदमी वो सुनना नहीं चाहता कि तेल की प्राइसेस बढ़ गई दुनिया में, बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। दे डोंट वांट टू हियर इट। दे सेड हमारा पेट्रोल सस्ता करो, हमारा आटा सस्ता करो। तो उसको सिर्फ ये चाहिए, तो उसको ये नहीं चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन माय गांव, माय विलेज, दैट्स व्हाट। सो आई थिंक sometime he tried to explain to the educated people which happen to know. I mean, I know कि अमेरिका में रहते हुए मुझे 50 साल हो गए, मैंने वो जो पेट्रोल की प्राइस है आजकल, गैस की प्राइस, इतना एक्सपेंसिव कभी नहीं देखा इन माय लाइफ, इन विंटर पर्टिकुलरली, दैट इट इज अराउंड $5 गैलन। बट देखिए अगेन, जो जनाब ये यूक्रेन और रूस के जो जंग चल रहा है, तो इसीलिए हमारे मुल्क में अमेरिका में गैस प्राइस तो आप देख रहे हैं दैट इट्स कमाल का गैस प्राइस हो गया, आई मीन $5 करीब। आई कैन नॉट बिलीव। देन इन and वेस्ट it has और been भी। expensive since Russia has those what you call the cyber attacks in our pipelines, cyber attacks. So since then it has been. तो अब देखिए कि वो जो हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हमारे में एजुकेशन की बहुत कमी है, तो हमें वो लैंग्वेज बोलना पड़ती है कि हमारा जो वोट देने वाला है वो समझे या खुश हो जाए। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। आई एग्री विद यू दैट वी डोंट नीड दैट लैंग्वेज, लेकिन उसका कुछ फायदा होता है उनको, पब्लिक को। अगर आपने नहीं देखा तो अभी भी इस्लामाबाद में जब जलसा था तो लोग चाह रहे थे कि ही शुड से समथिंग अबाउट मिस्टर डीजल, बट ही सेड आई वोंट से एनीथिंग अबाउट डीजल, बट एवरीबॉडी नोज। सो इट इज अनफॉर्चुनेट। हाँ, ये मैं जरूर चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में हो रहा है इस संडे तक हमें पता चल जाएगा, एंड होपफुली that whatever going to happen is going to happen good for Pakistan. Opposition मुझे तो लग रहा है दैट अर्ली इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि खान साहब अपनी इरादों में इतने पक्के हैं। वो लाइक आई डोंट थिंक दैट ही विल रिजाइन और स्टेप डाउन, और ऑपोजिशन का बिल्कुल
एफर्ट उनका यही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को जारी रखा जाए ताकि खान साहब स्टेप डाउन करें। तो आप बताइए जनाब, आपके अगर इलेक्शन होता है, देखिए इलेक्शन होता है एंड खान साहब इज ए पॉपुलर पर्सन, देयर कुड बी, इफ देयर इज इलेक्शन, हो सकता है खान साहब मेजोरिटी लेके आ जाए इफ देयर इज इंटैक्ट हिज पार्टी। देखिए खान साहब का एक प्रॉब्लम रहा है, और वो पर्सनली जो उनके लोग करीब हैं वो जानते हैं कि सम टाइम ही इज वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू हैंडल। अगर वो सोच लेते हैं कुछ, यार ऐसा है तो ऐसा है, नहीं खान साहब, we are in the political arena, we have to be nice. Like just I will say, they removed their Punjab uh, chief minister just last week. Yeah, you can remove it, but you don't fire him like this. Just you can come out and say, well, right now what we are doing some changings. Usman Burdar very close to me. I think I'm going to keep him one of my वो जो मुशीर होता है, जो मेरा वो होता है, उसको मैं रखूंगा, एंड पंजाब में मैं ये कर रहा हूँ, rather than just you fire a person who was very close to you. So इस किस्म की चीजें जो हैं, ये बंडल अप, ये गलत काम होते हैं पाकिस्तान में और इंडिया में भी ऑफ कोर्स। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि किसी बड़े आदमी को फायर करना होता है तो प्रेसिडेंट उसके बारे में अच्छी बात करता है, he has done good job, blah, 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 and let him go. But you don't fire him just, okay, you gone and he's coming. Unfortunately, I don't like it. देखिए सत्ता या तो पावर के लिए पूरी दुनिया में हमने कितने एग्जाम्पल्स मैं बोलूं आपको, ऐसे होता रहता है, इंडिया में भी है, पूरी दुनिया में है। सत्ता और पावर जिसको कहते हैं वो इतना ही नाजुक एक चीज है, इतनी जज्बाती कुछ चीज है दैट उसको पाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए लोग कोई भी हद तक जाते हैं, जा सकते हैं। तो this is what it is. Addiction. Power is addiction. I mean, just imagine when Henry Kissinger party and Nixon party, when they lost it in 1973 and 74. So one question they asked Henry Kissinger, कि कैसा लग रहा है? तो उसने कहा कि मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो एयरप्लेन था एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो बहुत आरामदेह था, एंड आई विल मिस दैट एयरप्लेन। सो वो जो एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ये होता है आना जाना, people love it. I know. That's a special person. People want that red carpet treatment, लोग जी Absolutely, हुजूरी करें। absolutely. अभी मैं किसी को बोल रहा था कि when I work in my office, I had a staff and I have this and that, and if I want to do something on computer, they will do it for me. And now I did not, computer पे मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, करता हूँ बहुत कुछ, लेकिन तो I was like this. Okay, so and so, can you do this thing for me? Okay, any volunteer who can do this thing for me? That was great. Once I left my job, I don't have that luxury with me. So sometimes I get frustrated. So just imagine people have been president and prime ministers. Once they lose it, how frustrated they get. I know, Anyway, I can ये imagine. होता है। मैं आपको एक और सवाल पूछती हूँ इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। तो अभी हाल ही में मैं कुछ टीवी चैनल्स फॉलो करती रहती हूँ। तो सभी टीवी चैनल्स एक्चुअली वो एक खत के बारे में बोल रहे हैं, जहाँ की आपके वजीर आजम इमरान खान साहब ने कोई एक फॉरेन कंट्री को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया दैट उस फॉरेन कंट्री ने ही ऐसे ऑपोजिशन को लड़वा दिया उनके खिलाफ। तो इसके बारे में अगर कोई टिप्पणी आप करना चाहें हमारे नाजरीनों को। मैं बिल्कुल बताऊंगा। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आई रियली वांट टू से कि आप बहुत ज्यादा इन टच है पॉलिटिक्स से, तो आई सलूट यू फॉर नोइंग ऑल। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, आपको पता है एग्जैक्टली दुनिया में किधर किधर क्या हो रहा है। सो आई मीन दिस थिंग टू मच इंटरनली इन पाकिस्तान अबाउट द लेटर केम। देखिए ये लेटर एक जो पता चला है न्यूज से कि ये एक एम्बेसडर ने लिखा है after he was in a meeting and listening everything what people are talking about. And this letter is about that certain countries and certain head of the countries are very upset why Khan travel
at that time To to Russia. Russia when there was a war. The Khan stance is that was a planned visit. It was not, he just visited it. It was a planned visit, which is true. And he visited. At that time, there was a war of Ukraine. But Khan did not sided with Russia or did not sided with the United States. Yeah, he said that there should be negotiation. So I think people who Pakistan has been very much tilted towards West, and Pakistan is trying to be in center. So Pakistan being punished, yes, no doubt about it. There was a time when India was in total Russian bloc, and there's a time came when India have to come out from the Russian bloc and join the West. And once it joined the West, I think they are getting all those IT people coming over here, and they're getting the fruit of the friendship with the West, and they are doing great. And West is a good friend of India. Unfortunately, in Afghanistan war, we have been so much through, like so many of our soldiers and our people got killed. And Imran Khan says that was not our war. That was America's war, which we were fighting. And he's right. And certain countries don't want to hear that. Unfortunately, वो जो हमारा गोरी चमड़ी है ना, उसको हैंडल करने के लिए देखिए जुल्फकार अली भुट्टो अमेरिका में पढ़ा, he fight with United States. इमरान खान गोरी चमड़ी के साथ इंग्लैंड में पढ़ा, he is fighting with the गोरा being a brown side. उन्होंने तो शादी भी कर लिया जमाइमा शादी को। कर लिया, शादी भी। तो अब ये है कि जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग यहाँ गोरी चमड़ी काली चमड़ी सबके साथ रहते हैं, एंड वी डोंट डिफरेंशिएट, ओके ये काला ये गोरा है, नहीं, हम लोग बराबर के। बट इंडिया पाकिस्तान में जब कोई गोरे आता है तो सब आगे, ओके यू डू दिस, व्हेन अमेरिकन एम्बेसडर्स और दिस पीपल, तो उनकी बहुत ज्यादा कदर होती है हमारे वहाँ, बिकॉज हम लोग ब्राउन साहब है ना। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे वहाँ का कल्चर है। तो चाहे वो भुट्टो साहब हो, चाहे इमरान खान हो, they really wanted to fight on the equal basis, and they are being punished. Unfortunate. मैं तो बिल्कुल तहे दिल से चाहूंगी कि उन्हें जितना जल्दी हो सके इस मसले हल हो जाए, क्योंकि देखिए जो भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, ये पूरा चीज बहुत ही कंफ्यूजिंग है, एक्सपेंसिव है, और जहां की एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस इतना ऊंचा हो गया, तो ये फिजूल का खर्चों में क्या बोलूं मैं, ये बहुत ही दुख की बातें हैं। और एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट आप हमारी टाइम का हो जाता है, वक्त एकदम बहुत जल्दी भागी जाती है, तो एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आई अप्रिशिएट यू कि आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं, एंड मैंने आपके 2-1 इंटरव्यू देखे हैं, तो मैं गार्गी जी ये समझता था, जो मैं आपको इतने से जानता हूं, कि यू आर fun lover, you love your culture, you love your history, you love those things, and that's what you are. But I never knew that you have a good anchor person too. And then knowledge उसकी। देखिए, अभी जो आपने पाकिस्तान के बारे में पूछा, जो वुमेन के बारे में पूछा, जो आपने बोला, so I'm sure you have done your homework before you ask a question. So let me first appreciate it and let me salute you for that you are doing good. देखिए, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारी कम्युनिटी यहाँ पे है, people like me who came from Pakistan, you came from India, but over here we are same. We have a great respect for each other. We have a same culture. We love our food. Unfortunately, ये जो चीजें हैं ना, इसको और broader level होना चाहिए। ठीक है, हमारे differences हैं। Religion is a secondary thing. Culture is the first. I think हमारी जो बोली है, हमारे जो गाने हैं, मेरा ख्याल है जितना लता जी के मरने पे आपको अफसोस होगा, इतना मुझे भी हुआ। मोहम्मद रफी के गाने आज भी मैं सुनता हूँ, मुकेश साहब को आज भी, तो हम कल्चरली तो हम लोग बिल्कुल एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे वो मेहदी हसन खान साहब हो और चाहे कोई भी हो। लेकिन ठीक है, हम लोगों के डिफरेंसेस हैं, एंड वी हैव टू लर्न टू हाउ टू लिव विद द डिफरेंसेस। यस, nobody is perfect, and
मैं कुछ भी बोलूं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वी लव ईच अदर। हमको वहां की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ नहीं लेके आना चाहिए। I have been a big advocate. Okay, leave the politics over there. Muslim League or Tehreek-e-Insaf and Congress and this and that. Leave it over there. I think हमारे बच्चे जो है ना, they don't want to know either. We are good human being and work as a human being. तो मेरा मैसेज यही है कि हम लोगों को थोड़ा सा इतनी टॉलरेंस होना चाहिए कि इंडियन एंड पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उधर नहीं लेके आओ। देखिए पूरा कंट्री एक हो जाता है, कभी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो, टेक अ लुक, वी आर सो क्रेजी, वी लव इट। तो हमें यह है कि हम लोगों में टॉलरेंस होना चाहिए, हम लोगों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और यस हमारी डिफरेंसेस हैं, बट वी कैन लिव विद दोस डिफरेंसेस, नो प्रॉब्लम विद दैट। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हमारा उठना बैठना, खाना खजाना, हंसना हंसाना, देन गाने के साथ खाना गाना, डांस, एवरीथिंग तहजीब, एक दूसरे के कल्चर बहुत मिलता जुलता है। मेरी परवरिश इस वतन में हुई है, लेकिन मेरी रूट्स इंडियन है। और मैं बिल्कुल पाकिस्तानी कल्चर का भी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी स्टोरीज के ऊपर ड्रामा करी हूँ। एंड देन मेरी डांस ड्रामा, मेरी डांसेस, मेरी गज़लें, ये बहुत सारे लाइक आपके तहजीब के साथ मेरा काम, ताल्लुकात, प्यार मोहब्बत जो भी बोले, ये रह चुका है। सो थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त निकाल के असावरीज मीटिंग शो में आए। और आप इतने वेल एजुकेटेड, इतने वेल रेड, वेल स्पोकन, करिस्मेटिक, डिग्निफाइड पर्सनालिटी हो हमारे कम्युनिटी के। और पूरा कम्युनिटी आपको बहुत इज्जत करते हैं। मैं, हमारी टीम असावरी भी आपके बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं आपको फिर बुलाऊंगी अगर आपके टाइम हो तो। एंड नहीं नहीं थैंक यू वंस अगेन। बिल्कुल, मैं जाते जाते बस ये बताना चलूं कि मेरे अंदर आज भी एट दिस टाइम मेरे कजन्स इंडिया में होते हैं, मेरे माँ बाप इंडिया में पैदा हुए, मेरे सारे बहन भाई इंडिया में पैदा हुए। एंड व्हेन दे माइग्रेटेड अराउंड 1948 to Pakistan, so I'm the only one in my country who born in Karachi, Pakistan. तो अब मुझे नहीं पता कि मेरे सारे रूट्स इंडिया में आज भी हैं। That's my country. But in the meantime, I'm proud Pakistani. And now I'm a proud Pakistani American. तो अब देखिए ये चीज है कि अगर इंडिया की बात होती है तो मुझे पता है आज भी मेरे एक अंकल इंडिया में, आज भी यहाँ पे है यूपी में। ये फॉर मी दैट इज माई आल्सो जन्मभूमि, मेरा पूरा खानदान उधर है, उनकी कब्रें उधर हैं। तो हम लोगों को ये बचना चाहिए कि हमारे नजदीक इंडिया और पाकिस्तान जो है, यस दे आर ब्यूटीफुल कंट्री, दैट इज पास्ट, व्हाट एवर हैपन, नाउ we should be very proud that we came from the culture which is 7,000 year old. We have our food, our dresses, our libas together. तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके लोगों से बात करूं, बताऊं। और वो जो मैंने कहा कि टॉलरेंस है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, हम लोगों ने बात की। और इस दौरान मैं क्या कह सकता हूं? My great pleasure indeed, that, you came to my show and you gave such an informative information about three different mudda, three different issues and aspects. और अभी no confidence motion जो है, it is the hot and breaking news, सब लोग इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। तो बिकॉज पाकिस्तान ने ऐसे पूरी दुनिया का दिल जीत लिया किसी तरह। And then people know about your country so much. I mean, people talk about it. So मैंने सोचा that क्यों ना हम भी थोड़ा सा बातें करें, नहीं, बातें करने के लिए आपने उस पर जो रिसर्च किया वो उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि अपडेट एवरीथिंग। एंड रियली इसका मतलब ये है कि मुझे खुशी हुई जान के कि आप जानती हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है इंडिया में, एंड क्या हो रहा है इस कंट्री में। तो वेरी प्राउड टू नो अबाउट दिस थिंग। आपका और आपके नाज़रीन का और आपके देखने वालों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू। सो जनाब, जाते जाते मैं एक और गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप बहुत एक अच्छे मशहूर शायर हो, तो अगर आपका दिल करे तो हमारे नाजरीनों के लिए आप कुछ लाइंस सुना दें शायरियों का।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा एक चीज ये भी है कि कभी जब मैं, और काफी दफा गया हूँ कि 5 6 मरतबा इंडिया भी गया हूँ, दिल्ली, हैदराबाद, दक्कन, लखनऊ, वहाँ के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, फिर पाकिस्तान जब गया हूँ तो वहाँ के, तो यंग लोग जो है मेरा वो होते हैं टारगेट के, यंग लोगों से मैं कैसे बात करूं, क्योंकि मेरी पिक्चर ये होती है कि ए सक्सेसफुल पाकिस्तानी पर्सन इन अमेरिका, सो हाउ शुड आई टेल देम इफ आई एम सक्सेसफुल, तुम लोग मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो पोइट्री का यह है कि पोइट्री जो मैंने की उनके बाद जो लिखी वही था, शहर तारीख में एक शम्मा जलाकर देखो। शहर तारीख में एक जो डार्क सिटी होती है, जो हम लोगों की डार्क सोसाइटी है, शहर तारीख में एक शम्मा जलाकर देखो, मेरे पास आओ, मेरे दिल में समा कर देखो। वाह 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 वाह। मैं अंधेरों का मुसाफिर हूं, भटकने दो मुझे, तुम तो जुगनू हो, नई राह बनाकर देखो। और क्या बात। ख्वाब ख्वाब में ताजमहल देखते रहने वालों, एक मोहब्बत का घरौंदा तो बनाकर देखो। तो इस तरह की ये चीजें कि उनको मोटिवेट करना, उनको बताना कि आप लोग जो हैं, आप लोग बेहतरीन जनरेशन से आए हैं, ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा। तो ये मेरा है कि ख्वाब में ताजमहल देखते रहने वालों, एक मोहब्बत का घरौंदा तो बनाकर देखो। तो इसी तरह सक्सेस आती है। तो बहुत शुक्रिया आपका। ये थोड़े से जो भी शायरी है, ये नौजवान नस्ल के लिए थी। बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आपने लफ्ज बोले। थैंक यू सो मच जी, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।